about the past, as you can understand with the chapter name, verbs expressing the past, right? So basically, we will study here about past tense, the past tense of be. So we have to understand how we can use the verb be in the past tense. It was Sunday yesterday. Ruchi and Shikha were at home. On Saturday night, they had gone to bed late, so they were still not awake. They wanted to sleep longer, but their father was angry with them. The words printed in bold letters are the past tense form of the verbs be. So here we have to understand, students, like past form of be is was and were. जो be की past form होती है वो was और were होती है. Whenever we want to show the sense of be of the past, so in that case we need to use was or were, either was or were, right? Form positive, negative, interrogative. In this diagram we have to understand when we have to use was and when we have to use were. So simply you can understand, with the I you need to use was, with the we you are supposed to use were, you will use were, and he, she, it you will use was, and with they you will use were. So simply we can understand, with the third person singular and with the I we need to use was, and with the rest of subjects we will use were. हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ लेना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें वोज यूज करना है, और आई के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी हमें वोज यूज करना है। बाकी हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज करेंगे, राइट? और यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे आल्सो, विद द आई, ही, शी, इट और single name you will use was, and with the rest of subjects you will use were, right? And in the negative form you need to say that was not, you can say was, wasn't, and were not, weren't, right? The past tense of have. Soon after I left the school, it started raining. I had a raincoat with me, but the raincoat did not have a cap. Unfortunately, I did not have an umbrella, so could not cover my head. I got drenched in rain. When I reached home, I had slight fever. The words printed in bold letters are the past tense form of the verbs have. जो words बोल्ड लेटर में लिखे गए हैं वो पास्ट की फॉर्म होती हैं, राइट? सो बच्चों आपको ये समझना है कि बी की फॉर्म होती है वोज और वर, और हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। तो हमें अब यहाँ पे ये समझना है कि हमें कहाँ पर वोज और वर यूज करना है और कहाँ पे हमें हैड यूज करना है। तो जब आपको ये दिखाना हो कि सब्जेक्ट कुछ था, जैसे मैं कहूं कि वह मेरा दोस्त था, अब नहीं है परंतु पास्ट की बात कर रहा हूं, तो मुझे मैं होना शो करता हूं, सब्जेक्ट का कुछ होने का होना शो करता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि वह हमारा गांव था या वह हमारा घर था, तो मैं कुछ होना शो कर रहा हूं पास्ट में, तो बता रहा हूं कि सब्जेक्ट कुछ था पास्ट में जो अब नहीं है। तो उस कंडीशन में हम वोज और वर यूज करते हैं पास्ट के लिए। परंतु जब मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट के पास कुछ था पास्ट में, जैसे मैं कहूं कि उसके पास मेरा पेन था, उसके पास एक न्यू कार है, उसके पास एक न्यू नोटबुक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के पास पास्ट में कुछ था। तो सब्जेक्ट के पास पास्ट में कुछ था, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हैव की, जो क्या होती है हैड। और सब्जेक्ट ही कुछ था, जब हमें ये बताना हो तो उसके लिए हम वोस या वर यूज करते हैं, जो बी की सेकंड फॉर्म होती है, राइट? एक और सेंस के लिए हम वोज या वर यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि सब्जेक्ट कहीं पर था, राइट? जैसे मैं कहता हूं कि मैं घर पर हूं, सॉरी मैं घर पर था, आई वॉज एट माई होम। मैं ये बता रहा हूं कि मैं कहां पे था। मैं कहता हूं कि वह मार्केट में था, ही वॉज इन द मार्केट। तो जब मैं ये बताना हो कि सब्जेक्ट कहीं पर था, उस सेंस के लिए भी हम वोज या वर यूज करते हैं पास्ट के लिए, राइट?
तो सब्जेक्ट पास्ट में कुछ था या सब्जेक्ट कहीं पर था, उस सेंस के लिए हम वॉज या वर यूज करते हैं पास्ट में, और सब्जेक्ट के पास कुछ था पास्ट में, उस सेंस के लिए हम हैड यूज करते हैं, राइट। बट वेन एवर यू नीड टू से नेगेटिव सेंटेंस, जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो जहां पे हैव की सेंस हो, देयर यू विल यूज डिड नॉट हैव, राइट। वहां पे आपने डिड नॉट हैव यूज करना है, और हैड नॉट भी यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज आई नीड टू से दैट मेरे पास एक पेन था, आई विल से आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं था, आई कैन से दैट आई डिड नॉट हैव अ पेन, और आई कैन से दैट आई हैड नॉट अ पेन। बोथ आर राइट, राइट। फॉर्म, positive form had, negative form had not, did not have. These things I have told you. Interrogative had you, did you have, right? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ had you a pen, या मैं बोल सकता हूँ did you have a pen. Both are right. Some examples are written here. I had a pencil. मेरे पास एक पेंसिल थी. I had not any pencil. Oh, you can say that I did not have any pencil, right? Had you a pencil, or you can say that did you have a pencil. Both sentences are right for the interrogation, for the interrogative sentence. Short form, I had, I'd. अगर आपने had लगाना हो तो उसका d लेटर ऐड करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे I'd. I had not, I'd not, I hadn't, right? So in this way you can see simple past tense. Now let's talk about the simple past tense. It was my birthday yesterday. I invited all my friends to tea. Mother baked the cake for the party. Father decorated my room. My friends brought presents for me. But my dearest friend, Sumi, did not come. Her mother was not well. She did not allow her to leave home. The words printed in bold letters are in a simple past tense. So here we have to understand the words which are written in the bold letter. These are the part of the past tense, or we can say that simple past tense. तो ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं बोल्ड लेटर्स के अंदर, ये पास्ट टेंस का पार्ट है, बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर सेकंड फॉर्म, एंड सेकंडली वी आर टेलिंग समथिंग व्हिच हैपेंड इन द पास्ट। हम कुछ ऐसा बता रहे हैं जो पास्ट में हुआ। सो फॉर दैट वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑफ मेन वर्ब। But you can see that when sentence was negative, so we used did not come. Like you can say did not means like did not, then root form. So whenever our sentence is in negative form and we are talking about the past, which something happened in the past, so in that case we need to use did not plus root form. But when we are saying positive sentence of the past, then we need to use second form. Remember this. Okay, so these things I have told you. Whenever you see, whenever you have to use do, does, or did, always remember we should use root form after that. जब कभी हमें do, does या did को सेंटेंस में यूज करना हो, तो उसके बाद बेसिकली हम वर्ब की रूट फॉर्म यूज करते हैं, as you can see that in this example. The words printed in bold letters are in the simple past tense, a simple past tense form. Positive statements, past tense of the verb means second form we should use. Negative sentences, subject plus did not, root form of the verb, then object. Interrogative sentence, did subject, root form of the verb plus object. Question word, did not subject, sorry, did subject, root form of the verb. Short forms in negative and in negative interrogative sentence, did not is generally shortened as a didn't. I didn't play, he didn't play, didn't you play? So we have to understand the same thing here. If our sentence is negative and we are talking about the past, so we should use did not plus root form. But if our sentence is interrogative and we are talking about the past, so first of all we should use did, then subject, then root form. And if we are putting question word in this, so first of all we have to say or write question word first, then did, then subject, then root form, right? And short form of did not is didn't. Like I didn't play, he didn't play, didn't you play, right? So these things we have to understand. Next, E point, simple past tense uses. So here we will understand when we should use the simple past tense.
Simple past tense is used to express actions that took place at some time in the past and are over now. These actions might have occurred at some moment or might have taken a period of time, but they do not have any connection with the present. We can show these actions in the form of the diagram. So, dear students, here we have to understand like which actions were done in the past. So those actions we should make with the simple past tense. In this timeline you can see that यहाँ पे एक timeline दी गई है. जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कहने का टाइम है. जिस समय कोई बात बता रहे हैं वो टाइम है यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग. और पास्ट में कोई काम हुआ जैसे यहाँ पे दिखाया गया है यस्टरडे कोई काम हुआ तो उसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है. एक्शन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. पास्ट के किसी पॉइंट पे कोई एक्शन पूरा हुआ कंप्लीट हुआ उसके लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. एंड सेकंड सिचुएशन यू कैन सी दैट एक टाइमलाइन दी गई है और उसमें उस टाइमलाइन में एक टाइम दिखाया गया है जहाँ पे टीएस लिखा हुआ है. तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस टाइम पे हमने खड़े होके इस टाइम पे हमने यहाँ पे कोई बात कह रहे हैं पास्ट की. तो यहाँ पे कहने का टाइम है और ये जो टाइम है ये ड्यूरेशन दिखा रखी है. कोई काम पास्ट में हुआ वो थोड़े टाइम तक हुआ उसके बाद वो खत्म हो गया उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. जैसे वी स्टेड एट कानपुर फॉर 2 वीक्स. हम कानपुर में 2 वीक के लिए रुके. रुकने का काम पास्ट में हुआ. हम हमारा रुकने का काम 2 वीक तक चला उसके बाद वो रुकने का काम खत्म हो गया वहां से निकल गए. तो कोई काम पास्ट में किसी पॉइंट पे हुआ उसके लिए भी सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. कोई काम कुछ ड्यूरेशन के लिए हुआ पास्ट में उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट पॉइंट 2. दिस टेंस आल्सो एक्सप्रेसेस सम पास्ट हैबिट. वी यूजुअली वेंट टू स्कूल बाय बस. वी नेवर वर्कड एट नाइट. तो ये जो टेंस है ये पास्ट की हैबिट को भी डिनोट करता है यानी कि कुछ ऐसी बातों को बताता है जो हम पास्ट में करते थे. राइट. लाइक वी यूजुअली वेंट टू स्कूल बाय बस. हम अक्सर स्कूल बस के द्वारा जाया करते थे. वी नेवर वर्कड एट नाइट. हम रात में काम नहीं करते थे. सो इफ वी हैव टू डिफाइन द हैबिट ऑफ पास्ट सो वी कैन यूज दिस टेंस. नोट व्हेन वी वांट टू सजेस्ट सम पास्ट हैबिट we often use words like usually, generally, always, sometimes, frequently, never, often with the simple past tense. जब पास्ट की हैबिट को डिफाइन करना हो तो यूजुअली ये जो वर्ड्स हैं वो हम सेंटेंस के अंदर लिख देते हैं जिससे हमें पता लगता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. राइट. वर्ब एक्सप्रेसिंग द पास्ट. Simple past tense form. Past tense of the verb means past tense of the verb means second form of the verb. In the negative sentence, did not plus root form uses actions that took place at some moment in the past, action that took place over a period of time in the past to denote past habit. यानी कि तीन बातों के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. कोई काम पास्ट में हुआ उसके लिए भी, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ थोड़े टाइम तक वो चलता रहा उसके बाद वो खत्म हो गया उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. और कोई पास्ट की हैबिट बतानी हो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. राइट. So according to this sense, you need to fill the exercise 1. Speak out these sentences in negative form, interrogative form, and negative interrogative form for oral practice. So this exercise you have to do for the oral practice. यानी कि orally आपने बोल बोल के देखना है. ये सेंटेंस दिए गए हैं इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करके बोलना है और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके बोलना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके भी बोलना है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है they drove their cars very fast. उन्होंने अपनी कार बहुत तेज चलाई. So say in the negative sentence they did not drive their cars very fast. Say in the interrogative sentence did they drive their cars very fast. Negative interrogative didn't they drive their cars very fast. Right. So you need to remember that whenever you use do, does, or did, because in the negative sentence or in the interrogative sentence basically we use the did helping verb. And we need to remember that whenever we use did helping verb so we should use the base form of the main verb or root form of the main verb. So we will not say drove, we will say drive. Like they did not drive their cars very fast. So you should do oral practice of these sentences. Next,
Rewrite the passage given below using the past tense of the verb given in the brackets. So some verbs are written there, so you need to write the past form of these passages, right? Like you can like see first example is written there. Once upon a time there dash a boy who liked to draw things. So you should write here, once upon a time there was a boy who liked to draw things. So means you need to use the second form of the main verb here. Then you have to rewrite this passage, right? So you should do this exercise by yourself. Come on, the exercise number 3. Write questions to which the words in the bold letters in these sentences may be suitable answers. So which words are written in bold letters? So you need to change those words into interrogative words, means WH words. जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं बोल्ड लेटर्स में, उनको हटा के उनके स्थान पे आपने क्वेश्चन वाला वर्ड लगाना है. जैसे कि we took our dinner at 9 p.m. हमने 9 p.m. पर रात के यानी कि 9 बजे हमने अपना डिनर किया था. So how we'll make this sentence if we do not want to use at 9? So we can say that when did you take your dinner at sorry, when did you take your dinner last night? तुमने last night अपना dinner कब लिया था? Second, I gave the books to the librarian. So whom did you give the books? मैंने अपनी books librarian को दी थी. तुमने अपनी books किसको दी थी? So in this way you need to form the questions, right? So next, past continuous tense. Yesterday I went to District Park early in the morning. I really enjoyed the scene there. A number of children were running around. Some people were briskly walking. Some were taking exercise. Some were just chatting with one another. The words printed in bold letters are in the past continuous tense. So here we have to understand the words which are written in the bold letters. These words are of the past continuous tense. यहाँ पे जो words लिखे गए हैं bold letters के अंदर वो past continuous tense का part है. Past continuous tense form affirmative sentences was and were plus ing from the verb, like I was playing, they were playing. तो हमें यहाँ पे समझना है कि whenever we have to use the past continuous tense, in that case we will use helping verb was or verb, and main verb fourth form of the verb, or we can say ing form of the verb. तो जब हमें पास्ट यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वोस या वर यूज करते हैं, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जिसे हम बोल सकते हैं कि आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज करते हैं, राइट? हमें पता है कि वोस कहाँ यूज करना होता है, वर किसके साथ यूज करना होता है? व्हेन आवर सब्जेक्ट इज आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर. With I and third person singular, we should use was, and with the rest of subjects, we should use were. And only for fourth form of the verb we should use here, so that's why we don't have any option. So when sentence is negative, we will put not after the was or were, like I was not playing, they were not playing. When we have to make interrogative sentence, so we will use our helping verb before the subject, like was he playing, were they playing, क्या वह खेल रहा था, क्या वे खेल रहे थे, right? Past continuous tense uses the past continuous tense is used to express an action which was in progress at some point of time in the past but whose time limits are not mentioned. So here we have to understand, when any action was going on in the past and duration is not mentioned of that action, so for those actions we should use the past continuous tense. तो जब कोई काम पास्ट में हो रहा था और उसकी ड्यूरेशन मेंशन नहीं है कि वो कब तक हुआ, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जैसे कि देवर पेंटिंग द डोर्स, हम ये बता रहे हैं कि पास्ट के किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं और उस पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि उन्होंने वो पेंटिंग कर रहे थे. तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में एंड हो गया और उसकी ड्यूरेशन नहीं बताई गई है, उसका टाइम नहीं बताया गया है, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. टाइमलाइन पे देख सकते हो, टीएस मींस टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय आप ये बात कह रहे हो वो प्रेजेंट टाइम है और आप पास्ट के किसी पॉइंट की बात कर रहे हो और तब वो पर्सन वो काम कर रहा था, तो हम कह सकते हैं ही वाज पेंटिंग द डोर्स, और वी कैन से दैट दे वर पेंटिंग द डोर्स.
A light breeze was blowing. Right. Next to second point. Very often, simple past and past continuous tense are used together. Then they suggest that one activity was continuing when another took place. Nitin was sleeping when the telephone bell rang. Nitin was sleeping, time of speaking. The telephone bell rang. The boy were making a noise when he entered the class. So we have to understand. Sometimes it happens like we talk about the past and two actions were done in the past, and which was the main action that was going on, and suddenly any another action happened that time. So which was the going on, we should use for that action past continuous tense, and which happened in the past we should use simple past. So हमें यहाँ पे समझना है कि कभी कभी दो एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में होते हैं। एक एक्शन चल रहा होता है और उसी समय कोई दूसरा एक्शन होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा दोस्त मेरे घर आया जब मैं पढ़ रहा था। तो उसके घर आने का जो काम है वो हमें सिंपल पास्ट में बनाना है, और उस समय हम क्या काम कर रहे थे वो काम प्रोसेस में था, गोइंग ऑन था, तो हमने उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। राइट। जैसे हम कह सकते हैं मैंने अ, तब चैप्टर समझा जब मेरे सर मुझे पढ़ा रहे थे। तो मेरा काम जो पढ़ाने का था वो प्रोसेस में था, आपका समझने का काम पास्ट में हुआ। तो ये वाला काम आपने आपके समझने वाला काम बनाएंगे सिंपल पास्ट में, और जो मेरा काम प्रोसेस में था समझाने का, तो उसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। राइट। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। Past continuous tense form was, were, ing form of verb, and was, were not, ing form of the verb, uses action that were in progress at some point of time in the past. Simple past and past continuous tense are used together to denote an action that took place in the past while another action was in progress. Same thing I have told you. So on the behalf of this understanding, dear students, you need to fill the exercise number 4. Fill in the blanks with the correct tense, simple past or past continuous of the verb given in the brackets. तो आपको देखना है कि कौन से पार्ट के अंदर हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है और कौन से पार्ट के अंदर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है. You should try this exercise in your practice notebook. Soon I will send the answer key, then you can match the answer, and if you have any doubt then you can ask. Right. So this exercise you have to do by yourself. Now let's understand present perfect tense. I have just received your message. I am delighted to learn that Sajid has got an offer to represent the school in chess. I hope he has not rejected the offer. Why have you not written anything about mother? Has she recovered from malaria? The word printed in bold letters are in the present perfect tense. तो हमें यहाँ पे समझना है कि जो लेटर्स जो वर्ड्स बो लेटर्स में लिखे गए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज इन द प्रेजेंट परफेक्ट वी यूज हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. राइट. So we have used here has or have and third form of the main verb. That's why these sentences are the part of the present perfect tense. Present perfect tense form. Affirmative sentences has, have plus past participle form of the verb. Past participle form means like third form of the main verb. I have played, he has played. Negative, not inserted after the first part of the verb, like I have not played, he has not played. जो अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसको जो नोट है हम हैज और हैव के बाद यूज करते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस has or have subject past participle form of the verb then plus object. Question word has have subject past participle form of the verb. So whenever we put the question, so in that case we need to use has or have before the subject, then we have to use subject, then we have to use third form of the main verb. So this is the formation of a present perfect tense. Then now here we have to understand in which condition we should use the present perfect tense. This tense is used to express an action that has been completed recently. तो ये जो टेंस है ऐसे एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं जो रिसेंटली अभी अभी पूरे हुए हों. ही हैड जस्ट लेफ्ट, उसने वो अभी अभी वहां से गया है.
ही लेफ्ट ओनली a little while ago, यानी कि अभी थोड़े समय पहले वो यहां से गया है. वी हैव जस्ट रिसीव्ड दिस इंफॉर्मेशन, हमें यह है बस अभी ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है. वी रिसीव्ड इट ओनली अ शॉर्ट while ago. The word just is often used with this tense to suggest that the action was completed only a little while ago. तो just word को हम यूज करते हैं इस टेंस के अंदर ये शो करने के लिए कि जो हमारा एक्शन है बस थोड़े टाइम पहले हुआ है. Second, the tense express an action which was completed in the past but whose effect can be felt at the time of speaking. I have taken my breakfast, so I am not hungry now. I have seen this movie, so I need not to see it again. तो उन एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं जो एक्शन अब से पहले यानी कि पास्ट में हुए हो, परंतु उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है, उस असर का रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट से कनेक्टेड हो, प्रेजेंट में हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. राइट. जैसे कि आपने खाना खाया. अब सपोज करो कि अब 11:30 है, आपने 10 o'clock खाना खाया. ठीक है, तो आप कहते हो कि आई हैव ईटन द फूड या आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट. इसका मतलब है कि आपने ब्रेकफास्ट खा लिया था या खा लिया है, परंतु उसको अभी भी आपको भूख नहीं है, यानी उसका इफेक्ट प्रेजेंट में उसका एग्जिट करता है. सो उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ता है. राइट. तो अगर आप कहते हो कि आई एट द फूड, यू टॉक अबाउट इन द सिंपल पास्ट टेंस, उसका जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता अब प्रेजेंट में, तो उसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है. कोई भी एक्शन अगर जो पास्ट में हुआ हो, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में मौजूद हो, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है. उसका असर, उसका इफेक्ट एग्जिस्ट ना हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट से कनेक्टेड ना हो, तो उसके लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है. राइट. जैसे आप कहते हो कि आई लर्न द क्वेश्चन आंसर, और यू कैन से आई लर्निड द क्वेश्चन आंसर, तो इसका मतलब अपने पास्ट में क्वेश्चन आंसर लर्न किए, उसका रिजल्ट अब नहीं है मौजूद प्रेजेंट में, वो भूल गए आप. अगर आप कहते हो कि आई हैव लर्निड द क्वेश्चन आंसर, इट मीन्स लाइक यू हैव डन द पार्ट ऑफ लर्निंग टू क्वेश्चन आंसर एंड नाउ स्टिल यू रिमेंबर दैट बट व्हाट आर द आंसर, और अभी भी आपको पता है कि उनके आंसर क्या है, यानी कि जो रिजल्ट है अभी भी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है. राइट. तो हम दो बातों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. ऐसे एक्शन जो अभी अभी पूरे हों, जो एक्शंस अभी अभी पूरे होते हैं तो उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में होता है. सेकेंडली, ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो गए हो और उनका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में मौजूद हो, यानी कि वो पास्ट प्लस प्रेजेंट हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. राइट. नोट, in addition to just words like already, ever, never, yet, often, lately, and expressions like this morning, this week, this afternoon may be used with this tense. इस tense में हम ये वाले जो words होते हैं हम basically use करते हैं, जिससे पता लगता है कि हम present perfect tense के बारे में बात कर रहे हैं. So exercise number 5, rewrite the flowing passage using the present perfect tense of the verbs given in the brackets. So आपने ये पैसेज रीराइट करना है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है. लाइक cricket match between our school and DAV Model School is about to begin. The two teams already arrived. So we have to use here the two teams have already arrived. So you need to use past perfect tense here, right? Simple past and past, simple past or present perfect, and this and yes, this we will discuss in the next lecture. And exercise number 6 also you have to do, right? So now if you want to ask any question, so please come forward, raise your hand if you want to ask any question.